Hello everyone, welcome to Maths by TV. Here we have one interesting question. The function f of x equal to mod x plus mod x upon x is, there are four options: continuous at x equal to 0, discontinuous at origin as mod x is discontinuous at x equal to 0. Third option is discontinuous at origin as mod x upon x is discontinuous at x equal to 0. And option 4 is discontinuous at origin as mod x and mod x upon x are discontinuous at x equal to 0. So let us divide our function in two parts. Right, f of x equal to mod x plus mod x upon x. Let this function be h of x and this be g of x. Right, first h of x. Right, h of x is mod x, but for x greater than or equal to 0, mod x is nothing but x, and for x less than or equal to 0, mod x is nothing but minus x. So for now we are going to find whether this function is continuous or not, right? And then after this function, limit x tends to 0 minus left hand side limit, right? So left hand side limit x tends to 0 minus, so we have to put condition of this. एक्चुअली हमें यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखना होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ. चलो, फॉर x less than 0 function is minus x, so minus x here, limit x tends to 0. अगर 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0. सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन क्या होगा? यस, 0 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट x ग्रेटर देन 0 का फंक्शन हमें लेना. सो x, so this is nothing but 0. So as you can see here, left hand side limit equal to right hand side limit, and f of 0, if I put x equal to 0 here, the answer is 0, so equal to f of 0. So actually h of 0 हमने क्या लिया है मोड को? यस, h of x. So h is continuous on at x equal to 0. But so actually this is modulus function, right? This is modulus function, and modulus function is continuous everywhere actually. Second, g of x. G of x is nothing but mod x upon x, right? So for x greater than 0, for x equal to 0, and for x less than 0. For x greater than 0, mod x equal to, yes, x greater than 0, mod x equal to x, so x upon x, so this is nothing but 1, right? For x equal to 0, x equal to 0 क्या होगा? Undefined, yes, 0 by 0. And for x less than 0, minus x upon x, that is minus 1. As we can see here, for x equal to 0, our function is undefined, 0 by 0 form, right? So we can say that if function is undefined at x equal to 0, means function is g of x is
discontinuous at x equal to 0. So if h of x is continuous at 0 but g of x is discontinuous at 0, means f of x equal to h of x plus g of x is discontinuous. My reason is g of x is discontinuous at x equal to 0, राइट। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर एडिशन का फॉर्म है, अगर ये 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, अगर ये 0 पर कंटिन्यूस है और सेकंड फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो x, ये जो f ऑफ x है वो भी x इक्वल डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा, राइट। बट एक सिंपल सा लॉजिक बताता है बच्चों। सबसे पहली बात, दिस इज सिग्नम फंक्शन, राइट, एंड सिग्नम फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है, क्यों? फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज 1 एंड फॉर x लेस देन 0 फंक्शन इज -1, सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पर इससे भी हमें पता चलेगा, राइट। सो डेफिनेटली फर्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। अगर इसे अगर MCQ में करना है तो कैसे करेंगे बच्चों? दिस इज मॉड फंक्शन, राइट, ये कंटिन्यूस होता है एवरी कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू R, बट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, राइट। सो अगर x ग्रेटर देन 0 लोगे तो कंटिन्यूस होगा, x लेस देन 0 लोगे तो भी कंटिन्यूस होगा, बट 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, राइट। सो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस होगा रीजन। चलो बच्चों, ये कंटिन्यूस तो है नहीं, तो ऑप्शन है कैंसर। डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन एज दिस, नो, बट मोड फंक्शन तो कंटिन्यूस है, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 0 पर, राइट। सो mod x अपॉन x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, सो हमारा फंक्शन ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूस होगा। ऑप्शन सी दोनों तो डिसकंटिन्यूस, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।